Yes, so we are live. So it's about time we have to start. Hi everyone. We are here yet with another session. And myself, Arijit Acharya, I'm the organizer of GDGHITK. And here we are with another, good, really good. This thing, it wasn't, has been, um, was in my time when I joined GDG. So this is the first time we are doing something like a DSA series. And so, yeah, with me, I have uh, our CP lead, Ayushman, who will be taking. And we are very thankful to Ayushman that he, like, वो मान गए to have this, series because it's really a hard job to, continue for 50 days straight. And yes, Ayushman, Yeah, thank you, Arijit, for introducing me. Hello, everyone. Am I audible? If people can also interact in chat, that would be very better. Yeah. So yeah, I am Ayushman, CP mentor of GDGHITK. So this is an initiative by GDG to start a DSA series, which will be going on for 50 days, and I will be live on every alternate days. So all the things will be discussed in today's introductory session. So welcome all on board and a very happy new year to you guys. Okay. So moving on. The name of this series given is Goated DSA Grind, an acronym for GDG, which I hope people will show up, learn and grind smartly together. So what is this series all about? We will have a 50 days series and I will be going live every alternate days. So today is third, so I'll go live on fifth, seventh, so all the odd dates that are there. And for the next day after the session, we will be giving questions to solve. And when you come back, we'll be interacting on those questions and then moving on to the next topic of the day. This is how we actually proceed. So yeah, that's what I said. Every alternate days, we will be having sessions, and then we'll give you practice sheets to be done. This is how we will be conveying you the notes and the updates of the session by Notion, by the community updates that's on Telegram and on WhatsApp. I hope people have joined it. If not, I guess Arijit will be providing every details in the description and all. So yeah, there and yeah, also you can get the notes drive links on in the description itself. Okay. So Abba why is DSA important? So people say, especially beginners say, are very confused about कि DSA करे, dev करे, क्या करे. So DSA plays a major role in this because you anyhow have to learn DSA, or I'll suggest everyone should learn DSA because it as it's written, it improves your problem solving skills. Now problem solving skills तो क्या है कि सब तरफ लगेगा ना. It's not कि just एक ही फील्ड में हम लीड कोड कर रहे हैं तो लीड कोड पे ही लगेगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि if you are doing dev, you still need functions calls, you still need algorithms that will present things on the UI UX. So there are all the things that are running on behind. अगर आप डेटाबेस बना रहे हो, अगर आप नेटवर्किंग में नेटवर्क्स रिले कर रहे हो, बिट्स रिले कर रहे हो, तो फॉर एवरीथिंग यू नीड अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट? अब आप सारे डेटा को एक स्ट्रक्चर में डालिएगा एंड देन यू विल हैव टू कन्वे इट एंड देन यू विल हैव टू रिट्रीव इट. तो डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, उसका रिट्रीवल इंपॉर्टेंट है. दैट्स हाउ इट कम्स डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर है जहां पे आप डेटा डाल रहे होंगे, एंड द एल्गोरिथम्स आर एफिशिएंट वेज टू रिट्रीव दोज data that we put into the structure. It makes your code efficient, essential for interviews and exams. वो तो I mean काफी secondary है, but for some people it's a primary reason because of course job market. And then वो scalable codes softwares. It helps you to write scalable softwares. As I told you, to write efficient algorithms will mean to write efficient software designing. So yes, DSA is important at any cost. I think DSA should be given a preference by everyone.
moving on. So the details of the course. Okay, one sec. Yeah, we will also be going through the chat, so you can feel free to write anything, whatever it comes to your mind, and we'll be interacting. Yeah, exactly. Swamber, as I told, no one can promise job, but yeah, learning is on our part. So yes, we'll be learning. This course is going to be very fun. मेरे को जितना आता है वो सबको आएगा. Plus, what I will learn in this course will also be conveyed to you. So we'll learn together and we'll grow together. Yeah. Details of the course, the timing of the course will be uh, conveyed. Let me also write. Sarah notes will also be providing. So yes, introductory session का भी लिख ही देते हैं. So we have course details. सबसे पहला कि timing. As I told, कि we'll be having sessions on alternate days. So session timing will be every odd dates, and the timing will be a bit flexible on some days, but I guess we'll majorly be having it on the late evening side, be 8 p.m. almost. So let's fix this for now, and let's see if we have something, we'll be conveying it to you all. Okay. Now, moving on, what we'll be doing, we'll be providing you problem sheets in Notion and all that I told. Then we'll be having the language. The language what I will be using would be C++, but I say that whichever language it would be, if you do Java, if you do Python, I would prefer you to not select Python or go for Java and C++. If you have the core concepts right, if you have the logic right, if you have the building algorithm right, then you will optimize it in any language. Syntax आना चाहिए, बाकी logic and all will learn here. You will just have to work on the syntax part. अगर अभी थोड़ा time बचेगा, then we'll look into the C++ का syntax वगैरह भी, if people are interested. So if you can just tell in the chat that if you are interested in learning a bit of C++, just so that we can interact smoothly, and बाकी जो जैसे लगेगा we will learn on the go. अभी पूरा C++ सीखने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा ना. So it's like you don't wait for all the city lights to go green and then you start. अभी एक series चल रहा है, so just be here, start it, and then we'll, yeah. Sure. So as people are saying that they are interested, so we'll be also carrying on with a bit of C++ today, and then from the next day onwards, we'll be having sessions as scheduled. So let me show you this. This drive link will be shared to you. Here we have a session plan for now. अभी के लिए what we have is, yeah, this will be updated accordingly. So according to your responses, according to uh, the commitment of people also, we will be also updating it. So the first phase will be introduction, time complexity, and analysis, arrays, basic and advanced, and strings. So the first session, which will be after today, that's on 5th, will be doing introduction to DS and time complexity. So we will be analyzing these things, the common complexities, as well as a bit of algorithms, I guess. So be very sure to join, and I know you'll love that. Next, we'll be having array basics on one day and array advanced problems on the other day. So what we will be doing is we will go pattern wise. ऐसा नहीं है कि पूरा डीएसए का एक टॉपिक हम लोग सीख रहे होंगे फिर जाके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, नहीं. We'll be going along with the questions. जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे. So I guess that would be a better way to approach data structures. Yes. उसके बाद अपन ये arrays advanced patterns पे जाएंगे. String basic session 4 है, and then we'll look on what we'll have to do. So this is currently here. अभी का आज का notes, कल का हर दिन का notes, you'll get this in drive. We also have a notion. यहाँ पे तुमको सारा problem sheets मिल रहा होगा. तो we will be updating it, don't worry. And yeah, this and that in the description panel, we'll also be giving you the links to all of these, and also in the community. Yes. So okay.
We have lots of time left. So I guess let's move on to learn a bit of C++. Are you guys there? Hello? You can just keep interacting in the chat. Yeah, right, Swamber. Any language that supports oops will be good. Right, right. Python is comparatively slow, so that's why we prefer C++ and Java. Uh, it's comparatively very slow. I have heard that what Python would do in somewhere around that would take weeks in Python is just done in 2-3 minutes in C++. So C++ is comparatively very fast. Here we'll be going with C++. Concept पूरा same है. Syntax थोड़ा अलग है, which I think people doing Java will know. Even if you don't know C++, even if you don't know Java, feel free to stick around. बहुत basic से जाएंगे. And then we'll also cover some of the medium and advanced topics. Okay. So let's do C++ थोड़ा. हाँ, exactly. Logic तो language specific होगा नहीं. So right. We have this basic से start करते हो क्या? Okay. So this is where we'll be learning C++. सबसे पहला लाइन अगर जो लोग C करे होंगे, so we need to import libraries, right? जैसे Java में भी we import like Java util packages and all. So here we will also be including the packages, include iOS stream, that's in C++. If it's C, you will write include stdio.h, standard input output. That's what here it is in C++. Okay. Next, we'll be using this namespace std. What this does is it helps us to use the objects that is defined under this std function. Okay, this std class. Sorry. So what all we will be using, like for printing, for taking inputs. That's what is that's what will be discussed here. Yeah. Anyone having any doubts? Zoom a bit. Okay, sure. Is it fine now? I guess that's fine. I guess. So zoom. All right. That's fine. I guess. Right. Okay. Sure. इसको थोड़ा now the start of the code int main as we have in C, that's what it's here in C++ int main. अभी बहुत basic देख रहे हैं, तो let's say we are declaring a variable int a is equals to 9. These are the data types which also if you don't know anything you will learn on the go, so don't worry about it. So we have int a is 9, int b is let's say 20, and then you write int c is equals to a plus b. Now for printing we use south, so we'll be using south c. Cout C, right? This is for printing. Fine. Saving the code, running it, we get 29. Cool. So this is a very basic function. We'll be going a bit fast on these all things because I think people should be adapting to it quickly. I will be also putting it here. Wait. Along the go, I'll be putting it in this panel also. Let me give the topic C++. So we'll have all the codes here for today. Okay. Moving on, let's say we'll look to the conditional statements. अब condition कैसे define करेंगे? Say if a is greater than 0, then what you do is put, let's say we define here int d. ये initialize किया मैंने. अब यहाँ पे मैं define करूंगा कि d is equals to a plus b, or else d is equals to a minus b.
So what I'm saying is if a is greater than 0, which is here true, so a condition true will be passing on here, and then d will be assigned the value of a plus b, that is 29. And now if I print d, that would give me 29, right? So let's save and check. 29, right? Now अब हम अगर इसका वैल्यू अपन कम कर दे, like let's say -2. So now this condition is false, and then let's say we have plus here, so to get a better clarity, or rather minus, or there will be no use of writing a condition statement. So if a is less than 0, which is here less than or equal to 0, then what you do is d is a minus b, that is -2 minus 20. So that would give me -22, right? So if I run this, we get -22. Now this is a syntax for having a single statement inside int. If we have multiple statement, then we need to put brackets here. We can also put a bracket in a single statement, but that's not necessary. To keep it fast, we'll adapt to indexes and indexings that are a bit faster to write. Okay. Now we have, let's say we print here, cout hi a is small. Let's, and again, if let's say we put integer greater than 2. So now here we have a greater than 0. So d will be executed and we'll have 22, and we'll also be printing this hi a is small. Hi a is small. We put a semicolon in the end of every statement. So yes, let's run this code, save it, run. Hi a is small and then 22. So how this happens, d is assigned a value 22 here, but it is printing after the execution of this statement, right? So we have a serial execution in C++, although it's a compiled language. So once D is assigned, we print this, and then we print this. Moving on, let's now go on to the loops. One second. Please move your video on top right, the bottom left. It's hiding. Arijit, can you move my video to the top right if you can check? Okay. Oh, even if my video is not visible, I don't think that's a problem for now. So let it be here. We'll carry on. अब देख थोड़ा लूप साइड चलते हैं, ठीक है? अच्छा वेट वेट वेट, लेट मी जस्ट सेव दिस हियर, लेट मी सेव दिस पार्ट, conditional statements, fine. Now see, what we'll be very commonly using would be loops, while loop or a for loop. If we are having a while loop, the syntax is this, और यहाँ पे अपन एक ये पास करेंगे, say an argument. This values to true, the while loop will run. If this value is to false, the while loop will not run, of course. Okay. So if we say a is greater than 0, the while loop will start running. And okay, because see, a is greater than 0 here. So this condition will be true, and hence the while loop will start getting executed. Unless we'll also include a concept of break and continue. So let's say after some time we break this statement. So if we write break, what will happen is the while loop will break. Okay. If we write continue for a particular statement, say if a is equal to 2, then continue. Now what this does is, what continue does is skips the loop for, or rather after this particular statement is hit. जब जब कंटिन्यू हिट होगा इसके ऊपर लेट्स से कि बहुत सारा है, लेट्स से सी आउट हाई एंडल. अब ये एंडल क्या है? एंडल इज अ न्यू लाइन
We'll also see कि एंडल से ज़्यादा efficient होता है this backslash n. Okay. We'll also tell you how and what all things are there. So अभी के लिए let's keep on endel. तो अभी ये क्या करेगा, a greater than 0 है तो ये अभी पहले हाई प्रिंट करेगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा एंड देन इफ यू विल सी a इज इक्वल टू कंटिन्यू, और इसके नीचे अगर हम लिखे हेलो, लेट्स सी, एंड देन यू राइट a माइनस माइनस. a माइनस माइनस क्या कर रहा है, दिस इज अ यूनिनरी ऑपरेटर. ये क्या कर रहा है कि हर इटरेशन के बाद a का वैल्यू बाय 1 डिक्रीज कर रहा है. दिस इज डिक्रीमेंटिंग a by 1. Why not std handle when we need to include the entire std namespace? Then we need to include the entire std namespace. Sorry, Anamika, I did not get your question. Why not std handle? Since we have included this using namespace std, right? So we did not need not read write every time std colon colon. Yeah, exactly. We won't be writing std everywhere, since writing this one statement will include everything. You don't need to write this. Okay. So, or else you'll have to also write std out every time like this. But uh, if you are writing using namespace std, so for the following, the whole complete program will not be using std colon statements. Yeah, it will slow, but I don't think it will significantly slow your whole process unless and until you are using stds in every step. Okay. Yeah. So moving on, if you write a plus plus, what that will do is increment by 1. Okay. We'll not be incrementing this because that will cancel, of course. So now what we'll do, a का वैल्यू 2 है, अभी इक्वल टू 2 होगा, तो जब सिर्फ हाई प्रिंट होगा, नीचे का कुछ प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज इट हिट्स दिस स्टेटमेंट एंड इट continues the loop without executing the rest of the statement, right? So one second, ये a माइनस माइनस भी execute नहीं होगा उसके बाद, right? So let's say we write it here. Hmm. And let's keep it 3. So what now it does is a's value is greater than 0, so it will write high. Now does a minus minus, so now a value is 2, and then it continues. If a is equal to 2, it continues and it does not print hello. Let's check what it does. See, it just prints hello once. Why this happens is a value 3 enters the loop, prints high, a minus minus, a value 2, and then goes to back to the loop again. So we have a high here. Now a value is 2, right? So on 2 it prints high again. Second, why can't I see? Yeah, there are 2 highs. Okay. Then again prints high, a minus minus. So now a value is 1. So it does not enter this continue statement and hence it prints hello. Okay. Now a value is 1 here. So which is again greater than 0. Prints high, a minus minus, a values is 0, and then again prints hello. Okay. Now a value is 0. So is 0 greater than 0? No. So this while loop ends. And this is how we execute a loop using while statement. The same we can use it using for loop. Let's save this once. Loop. Yeah, any further doubts you can raise in the chat.
we'll be moving with the for statement. So for का syntax बहुत काफी simple है. It's like just in how we had in C. Let's say I is equal to 0, I is less than 10, I plus plus, and then you see out I, right? So what it does is I का value 0 से start होगा. There is an execution process here. It will start with I value 0. Will check I is less than 10. Yes, enters the loop. Okay. Then prints 0. Then increments it. And then now I value is 1. It will check. So let me show you here. Yeah. So for statement, there is a for I is equals to 0. I is less than say n for any variable, let's say defined by n. I plus plus. We have this loop, right? So इसका एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस है यहाँ पे बहुत सारा लेट्स से लिखा हुआ. तो फर्स्ट इट विल चेक दिस, second will second will enter here, third will go here, fourth will go here, and this will carry on till the this condition is not satisfied. Till this condition is satisfied, it will uh, when I compiled this type for loop in the lab, it did not run. Why? Okay, so in lab sometimes what you have is a older version of C++. For then that for there you'll have to write int I here and just I here. That's an older version of C++, I guess, G++. So that's why it does not compile. But in newer versions, in LeetCodes and all, you can do here. Okay. So what this is doing is, it is defining this particular I for this loop only, not outside this loop. If you will read, when you will read the programming language, you will be reading about the limits of the variable, right? So this is limited to this particular block of code. This is a block of code. Okay. So if you are defining any variable inside this block of code, then this is limited to this block only. It will not be a global variable, and hence it will not be used away from this. What do you do here if you do this is you are defining this as a global variable. Global variable. Actually not global, it will be again in this int main here, but this is defined in the whole main block. Okay, so you can use it anywhere, and hence you need not write int I again. So if you write int I again, it will give you that you are declaring it again. You cannot declare a same variable twice. Let's see here. This will give you an error. Oh, once again, this just execute. Okay, this is interesting. If I define anything, okay, wait. Okay, as per I knew, this should have given an error. Let's say if you define B, then I guess again for sure it will give an error. Redeclaration. But for I guess it's what it's doing is it is defining one I for this main and one I for this whole block. So this block is the block I is also executing, and if you write wait. Let's say this I is 99. Okay. Outside this block, if you print I, it will print 99 only. Oh, sorry. So we expect a 99 at the end of the code, right? This is inside the main block, and this I is inside this particular block. Let's execute this. Yeah. So this is where if you read about the limits and scopes of the variable, you will be knowing this. In lab, probably it's because of the lower version of G++, but in LeetCode, I guess it will work. What is block? So whatever you write inside one particular this ये वाला symbol ना, इसके अंदर तो जो भी लिखेगी वो block होगा. If you have a function, let's say this is a syntax of a function, यहाँ पे parameter और यहाँ पे ये, तो ये वाला portion जो होता है ना, ये block होता है, block of a code. और अगर if you define it here actually without any inside any bracket, तो ये actually global variable होगा.
विच कैन बी यूज्ड इन एनीवेयर अलोंग द कोड। तो यहाँ पे अगर कुछ डिफाइन करो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। सो विदाउट गोइंग दैट मच इन डेप्थ, वो थोड़ा सा तुमको लैंग्वेज पे सीखना पड़ेगा, बट बाकी जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इधर से करेंगे, एंड वी विल बी प्रोसीडिंग सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे बेसिक फॉर लूप है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट रीडिक्लेरेशन ऑफ कोड्स वेरिएबल्स, जो कि ये देखो ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड एज रीडिक्लेरेशन। यहाँ पे अलाउड बोला क्योंकि वी आर यूजिंग दिस आई इन साइड फॉर लूप का ब्लॉक। Okay, so even I learned a new thing today. I never used this actually, so I did not know it. Yeah, so this is a thing. यहाँ पे आई प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 99 प्रिंट होगा क्योंकि वो उसके ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आई देखो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, वन सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन 9 के बाद ये एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा बिकॉज इट विल बी इक्वल टू 10, एंड इक्वल टू 10 इज नॉट लेस देन 10 ऑफ कोर्स। सो 9 के बाद एग्जीक्यूशन स्टॉप करके ये दिस प्रिंट्स 99 हियर। ओके, सो इसको भी अपन डाल देते हैं उस पर। So what will we did? We did a basic, we did a conditional statement, we did loops. Abhi, let's see what we have more. Initializations we saw. बाकी डेटा टाइप्स वगैरह तुम लोग थोड़ा सर्च करना, यू हैव टुमारो अ डे। यहाँ पे डेटा टाइप्स वगैरह सर्च करना, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक वी हैव स्ट्रिंग, वी हैव कैर, वी हैव डबल, वी हैव फ्लोट। सो जस्ट चेक ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारे पे चेक ऑन थोड़ा करना, सी प्लस प्लस या जहाँ पे भी तुमको लगता हो, जस्ट गो हियर एंड जस्ट राइट सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। और देख, वीडियो देखने से बेटर आई वुड सजेस्ट यू टू गो thoroughly through any of these blogs, right? What this will do is will increase your प्रिपरेशन स्पीड, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता वीडियो में जितना बताते हैं, लाइक यू कैन स्किप दीज थिंग्स, राइट? हेलो वर्ल्ड, आई मीन इट्स ओके, भावनाएं जुड़ी हैं इससे, बट ठीक है, यू कैन स्किप सम ऑफ द थिंग्स इन ऑर्डर टू बी अ बिट फास्टर इन योर प्रोग्रेस। डायरेक्ट अपन सिंटैक्स वगैरह देखेंगे, वी गो इन द आउटपुट स्टेटमेंट वेरिएबल्स, ये सारा देख लेना थोड़ा। these are the variables here, so just check on these, just check on the syntaxes. You will also get loops here, and all what you were saying, the block, the global variables and all, you will also be getting it here. I can't see it, बट हाँ थोड़ा मोड़ा सर्च करना, थोड़ा काम कर, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो एक बार फंक्शन कॉलिंग देखते हैं अपन। देखते, सो फंक्शन कॉलिंग में मान लो कि वी हैव सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अभी हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जस्ट लिसन टू मी, अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो तो यू विल बी क्लियर्ड ऑफ, देखो लाइक कि सम ऑफ नेचुरल्स। अगर देख इसमें ये भी होता है कि लाइक इफ यू गो थ्रू अ पर्टिकुलर naming convention, so you'll be actually naming it like some O capital of naturals. This is a good coding habit which you can implement in interviews. Either you know it, that's enough. So हाँ, sum of naturals and then you provide a number, say 10. ठीक है, देखो अभी ये VS Code shows you a red line because it doesn't know कि sum of natural क्या है. It shows sum of natural is undefined. तो अभी हम इसको define करेंगे, right? So function का syntax क्या है? Function it's like कि दिस इज मल्टी लाइन कमेंटिंग कन्वेंशन। अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे अपन की टाइप, रिटर्न टाइप, एक्चुअली रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, हियर वी पास ऑन द पैरामीटर्स, और ये तुम्हारा जो है वो है ब्लॉक ऑफ कोड।
दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अभी जैसे हम लोग सम ऑफ नेचुरल डिफाइन किया ना, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉइड। वॉइड क्या है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेट मी राइट हियर, वॉइड इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। उसके अंदर हम लोग प्रिंट विंट कराएंगे, बट हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर पाएंगे। एंड देन सम ऑफ नेचुरल्स, द नेम शुड बी सेम एज यू डिफाइन देयर। अब देख, हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तो you'll have to टेल इट कि भाई तुम एक इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, इंट एन। ओके, अब देखो, अब यहाँ से भी वो रेड लाइन चला गया, वॉइड सम ऑफ नेचुरल पे कॉल हो रहा है। वीएस कोड में एक अच्छा तरीका ये है सारा फंक्शंस देखने का। अगर तू यहाँ पे जाके कंट्रोल एंड क्लिक करेगा, यू विल गो टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन। So you can do this even if you are a developer or whatever. If there is a huge line of huge lines of code, you click here, control and click here, so you'll reach to that particular function. Okay, so अब हमने 10 पास किया है कि लेट्स से हम लोग को चाहिए 1 से 10 का सारा सम। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है, ये कुछ बात हुआ, इसका एलिमेंट क्या होता है ये सब तो समझा नहीं। इसका एलिमेंट यूज कर रहे हो। हाँ, int main is also a function, right? I'm sorry, Anamika, I'm not able to get what is your doubt. Okay, what is a function? So a function is like it helps you to write codes in a very modular format. अगर हम sum of natural 10 के लिए यहाँ यूज कर रहे हैं ना, अगला टाइम हम sum of natural हम लोग 9 के लिए भी यूज कर सकते हैं, वट एवर वी वांट। तो हम लोग को बार बार वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं, वी से इट एज डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई प्रिंसिपल। सो दिस फंक्शन वर्क्स अंडर दैट ड्राई प्रिंसिपल। ये सब थोड़ा चीजें हैं जो विल नॉट बी कवरिंग इन दिस कोर्स, बिकॉज उसको बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग सी प्लस प्लस यहाँ नहीं सिखाएंगे, हम लोग डीएसए पे फोकस करेंगे। सो हम बस अभी आज के लिए ये सीख रहे हैं, ताकि पीपल वोंट बी लाइक फुल्ली आउट ऑफ द माइंड की क्या चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा अपन फंक्शन कॉल्स हो गया, लूप्स हो गया, जो कि अभी रेगुलरली यूज करेंगे ऑन द स्टार्ट ऑफ द फेज। तो इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं ताकि थोड़ा हेल्प हो। और बाकी तुमको खुद से एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, बीट सी प्लस प्लस, बीट जावा, बीट पाइथन, एनीथिंग। व्हाट वी प्रेफर इज सी प्लस प्लस एंड जावा। ओके, तो फंक्शंस क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये थोड़ा सर्च करो। हम लोग यहाँ पे लाइक अभी सी प्लस प्लस तो नहीं सिखाएंगे, बट हाँ, डीएसए अगले क्लास से विल बी फोकसिंग ऑन कोर डीएसए। ओके, now our goal was here to get sum of n natural numbers, where here we have the number as 10. Okay, so what we can do is initialize a sum equals to 0, and for loop जो कि अभी हमने सीखा, for I int I is equals to 1, क्योंकि natural numbers बोला है, I is less than equal to n I plus plus। तो ये एक लूप चलेगा जो कि 1 से स्टार्ट होगा, है ना। 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो n तक जाएगा, विच विल बी 10 हियर इन आर केस। 10 तक जाएगा, और हर बार वो आई प्लस होगा। सो आई विल बी लाइक 1 2 3 ऐसे कर करके। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सम में इंक्रीमेंट कर देंगे। सो नाउ वी विल बी लर्निंग अ न्यू काइंड ऑफ ऑपरेटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो इसमें क्या होगा देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। जब हम वहां पे लिख रहे हैं ना, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो पहले हमारा आई है जो है आई जीरो, ठीक है, सॉरी आई वन है, और सम है जीरो, आई वन। लेट सम को हम एस अभी डिनोट कर रहे हैं, सम जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन, एंड हेंस सम विल बी इक्वल टू वन। अब यहाँ सम में स्टोर हो गया वन। नाउ आई विल बी टू। सो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कॉल सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, तो ये देखो आई, सम यहाँ पे वन लिखाएगा और प्लस आई के जगह पे यहाँ टू लिखाएगा। सो विल बी हैविंग थ्री। तो अब ये सम का यहाँ जो स्टोर होगा वो यहाँ पे अपडेट होकर थ्री हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ लूप वर्क्स। फाइन। तो अब यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसको लिखने का एक और तरीका है, दैट इज सम प्लस इक्वल्स टू आई। व्हाट हियर इट मीन्स इज द सेम थिंग, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। अगर हम लोग लिखते हैं ए माइनस इक्वल्स टू वन,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल्स टू a माइनस वन। ओके, सो आई ऑल्सो राइट इट हियर बाकी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ना। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। ओके, अभी सम अपडेट हो रहा है, पूरा लूप में अपडेट होगा, और एट द एंड हम लोग को क्या मिलेगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, काउंट ए सी आउट सम एंड देन बैक स्लैश एन। ओके, सेव। नाउ लेट्स रन दिस कोड। 55 इज द आंसर। देखो ये तो एक तरीका हुआ। अब हम लोग थोड़ा इसका एफिशिएंट वे में जा सकते हैं कि लाइक अगर हमको सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, कैन एनीवन गेस व्हाट दैट एफिशिएंट वे कुड बी? कैन एनीवन इन द लाइव चैट टेल मी what an efficient way can be to have sum of n natural numbers? It's quite easy. We all have learned it. Yeah, savvy. Bravo. That's it. So let's say अब हम लोग सीखते हैं कि int रिटर्न करना है, ठीक है? int रिटर्न करना है, और इसको फिलहाल के लिए क्या करेंगे कि एक दूसरा कॉल करते हैं, ठीक है? sum using maths। ये हुआ थोड़ा ऑप्टिमल तरीका। Why is it optimal? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी we will be discussing it all in our next classes, in our next class of time complexity. Okay, sum of naturals and n, and you just return one sec. Oh, sorry. In sum using naturals. You just return n into n plus one by two. अब देखो यहाँ पे हम लोग रिटर्न किया है ना, एक नंबर रिटर्न कर रहे हैं। दिस विल एक्चुअली बी रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू। तो we'll have to store this in an integer value in sum is equals to, क्योंकि यहाँ से एक वैल्यू उठ के आ रहा है ना, यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, सो एक जगह बनाना पड़ेगा सम। अभी ये सम एक एड्रेस, एक यहाँ पे फॉर नाउ लेट्स से कि एक बॉक्स है जिसमें ये आके एंटर कर जाएगा। तो अब हम लोग सम यूज कर पाएंगे, जो कि ये वाला पार्ट रिटर्न किया यहाँ से। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, वॉइड है, इसलिए वी नीड नॉट हैव इट एनी इन एनी वेरिएबल। यहाँ पे एक रिटर्न कर रहा है, सो वी हैव अ वेरिएबल सम। अब हम लोग अगर सी आउट कर दें सम को, यहाँ लिख देते हैं यूजिंग, हाँ। So this is how we can like chain multiple cout statements in a single cout statement. So chaining cout, okay. अभी देखो इसको रन करते हैं, so we get 55 using maths 55. But this is a better solution. Why? Because ये on one go ये तुम्हारा काम कर रहा है, right? So अगर we go in technical terms, तो इसका time complexity order of 1 होगा। And here ये तुम्हारा एक लूप चल रहा है जो हर एक बार आई 1 2 3 4 कहाँ तक, एन तक। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डेप्थ थोड़ा और देखेंगे। करेंटली दिस इज इट। ओके, सो वी हैव दिस यूजिंग फंक्शंस। लेट मी अगेन सेव इट। यहाँ पीडीएफ से जूम करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ड्राइव पे चला जाएगा। हम्म, सो हमने ऊपर ऊपर से सारा चीजें देखा है। एक रिकर्शन बाकी है। रिकर्शन इफ यू से आई विल टेल यू टुडे। शुड आई गो फॉर रिकर्शन? हेलो, ऑटो वेरिएबल्स और इटरेटर्स भी बता देना अगर हो सके तो।
ऑटो वेरिएबल्स और इटरेटर्स क्या है कि इफ यू राइट, हाँ वो हम लोग करेंगे उसको। आई I मीन वो जब इनपुट्स वगैरह लेकर रहेंगे ना तो करेंगे। आई मीन जब इटरेटर्स, जब हम लोग थोड़ा और एचटीएल साइड जाएंगे, जब टेम्पलेट्स, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स वगैरह करेंगे ना तो उसको भी करेंगे। व्हाट यू डू देयर इज जस्ट यू राइट एन इटरेटर इंट एक्स दैट से बिलोंग्स टू एनी वेक्टर, कुछ डिफाइन किया हो, वो सब हम लोग करते हैं बाद में। फॉर नाउ व्हाट आई वांट इज, अभी इतना आई गेस काफी है। एक रिकर्शन अगर वी कैन टेल तो रिकर्शन हो जाएगा। Rest of all the things we'll be telling you in this next classes. Okay. Yeah. Okay. So this is done. Let me just clear it up. अभी एक रिकर्शन का एग्जांपल लेते हैं। What recursion is कि एक ही फंक्शन को इफ वी कॉल बैक अगेन एंड अगेन। ओके, मान लो कि हमारे एक फंक्शन है और व्हाट वी लर्न हियर इज इसका एक पैरामीटर होता है, राइट? ये वाला एक पैरामीटर है। तो इस पैरामीटर पे दिस 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 पैरामीटर पे हम लोग इसको वापस से कॉल करेंगे। जैसे ये सम ऑफ नेचुरल है, लेट्स से एक फंक्शन का नाम फंक होता और इंट एन देता वो, ठीक है? रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स से वो फंक्शन एन लेता और हम लोग जब कॉल कर रहे होते तो लेट्स से हम लोग कॉल किए 5 से। ओके, ये इंट मेन के बाहर का पार्ट है। तो हम 5 से कॉल किए, अब हम इसके अंदर अगर हम वापस से रिटर्न स्टेटमेंट डालें उसी फंक्शन को कॉल करते हुए फंक विथ एन माइनस वन, तो इसमें क्या होगा, पहले वो फंक्शन 5 को लेके कॉल करेगा, फिर वो फंक्शन 4 को लेके कॉल करेगा, फिर वो फंक्शन 3 को लेके कॉल करेगा। ये सब तब तक चलेगा जब तक हमारा एक बेस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। यहाँ पे एक ये येलो वाले पार्ट पे एक बेस कंडीशन होता है विच टेल्स योर रिकर्सिव फंक्शन टू स्टॉप। कि मतलब अगर हम लोग माइनस करते जाएं तो उसका तो लाइक कोई लिमिट नहीं है ना, कभी तक कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे एक कि से इफ n is equal to equal to 0, then you return something else और return 0। तो अब ये क्या होगा कि ये फंक 3 गया, फिर ये फंक 2 जाएगा, 1 जाएगा, एंड देन जब ये 0 जाएगा तो अब ये पर्टिकुलरली 0 रिटर्न करेगा। और एक और फंक्शन होता है ये कॉल बैक, फॉल बैक करता है फंक्शन। अब ये 1 पे फिर 2 पे। सो you'll have to learn a bit about recursion. I hope you can do it in tomorrow's time। अभी हम लोग के पास थोड़ा कल का टाइम है, कल के लिए कुछ हम लोग के पास प्रैक्टिस शीट में है नहीं। हम लोग उसको जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। आज का इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसलिए आई विश कि तुम लोग रिकर्सन रिकर्शन वगैरह खुद से करो। आई मीन इफ यू टेल मी आई कैन टेल यू, बट दैट विल टेक अ बिट टाइम, क्योंकि रिकर्सन थोड़ा अच्छा से करना होता है फॉर गेटिंग इन थिंग्स विथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ऑल। आई होप तुम लोग रिकर्शन थोड़ा अच्छा से करो। सो just look out for any videos and you'll find it there, okay? Like um recursion, C++ का बेसिक्स आई गेस एक दिन में सीख सकते हो। ये हम लोग थोड़ा मोड़ा सीखे हैं फंक्शन कॉलिंग वगैरह। बाकी अगर क्लासेस वगैरह पे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा अपने को। वी आर नॉट फोकस्ड ऑन C++ लर्निंग, सो वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ। बट हाँ, आई वुड विश कि तुम लोग खुद से करो। ओके, रिकर्शन इज इन देयर इन C++, जावा, इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो C++ रिकर्शन में जाना, you'll see the same thing। देखो ये एक बेस कंडीशन है, if k is greater than 0 then return this और else return this। now see ये क्या कर रहा है, 10 यहाँ पे भेजा है, राइट? सो जब तक k greater than 0 है, k will do k plus k minus 1, जैसा अभी हमने बताया यहाँ पे जो बताया था कि जब तक वो 0 तक नहीं जाता तब तक वो कॉल करेगा। तो ये एक बेस कंडीशन है एक्चुअली यहाँ पे। जैसे ही k 0 से कम जाएगा तो वो रिटर्न करेगा 0 और वो फिर वापस कॉल बैक करेगा दूसरे फंक्शंस को जो कि उससे पहले कॉल हुआ था। इसका एक ट्री बनता है। सो इफ यू टेल मी आई विल टेल यू टुडे। व्हाट से, डू यू वांट टू स्टडी रिकर्शन राव थोड़ा सा?
हाँ राइट स्वयंवर, दैट्स लीफो। देखो अभी स्टैक का बात हुआ है तो लेट मी टेल यू समथिंग विच इज आई गेस अ गुड पॉइंट टू नो। हम लोग का जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होता है, राइट, दैट मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, ओके। तो जो पहला पार्ट होता है दैट इज नोन एज हीप मेमोरी। ये बहुत फास्ट होता है। यू कैन कंसिडर कि लाइक ए वन ऑफ द फास्टेस्ट रजिस्टर टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैक। ये एक स्टैक है, और फिर तुम्हारा जो प्रोग्राम करते हो तुम्हारा वो मेन मेमोरी। तो तुम जैसे इंट मेन लिखते हो वो सब लेट्स से यहाँ पे स्टोर हो रहा हो, तुम्हारा ऑल ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद द एड्रेसेस एंड ऑल जस्ट स्टोर्ड हियर। बट जैसे तुम एक फंक्शन कॉल किए, ऑल द कॉल बैक्स हो गया, तुम्हारा वो बाकी फंक्शंस हो गया, रिकर्शन हो गया, ये सारा चीज जो है, these all are the things that are stored in the stack, ओके। फिर जो हीप वाला पार्ट होता है दैट इज व्हेन यू अलॉट इन जावा, व्हेन यू अलॉट इट यूजिंग न्यू स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एंड सी, व्हेन यू अलॉट अ थिंग यूजिंग अ पॉइंटर एंड मेलॉक और केलॉक स्टेटमेंट्स, तब तुम एक हीप में अलॉट कर रहे होते हो। whenever you use a pointer and all, वो सब कॉन्सेप्ट अभी नेसेसरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वट एवर क्वेश्चन विल डू, अगर लगेगा, जब लगेगा विल बी डूइंग इट ऑन द गो, ओके। Recursion, if you tell me, I'll tell you the concepts of recursion stack and all, the tree, recursive tree and all. But उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, and it's already time right now. So I would want you to go and search a bit about recursion and all, ताकि थोड़ा idea हो जाए. This I'll be sharing in the PDF. Yeah, yeah, sure. There are some of the things which you'll have to do it by yourself, and that's better because you'll learn more, right? Cool. तो थोड़ा मोड़ा हम लोग C++ देखे हैं। बाकी गेट फेमिलियर विद लीड कोड, क्योंकि हम लोग का जो सैम्पल्स और प्रॉब्लम्स रहेगा वो लीड कोड पे रहेगा। we'll be doing time complexity in the next classes, okay? So I hope people will join and people will enjoy. आज तो बहुत बेसिक बेसिक सा है, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन था, वो तो सी प्लस प्लस थोड़ा सा बताया बस, ओके। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। अगले क्लास में और मजा आएगा क्योंकि वो थोड़ा चीजें इन डेप्थ जाएगी। व्हाट आई ट्राई इज टू टीच और टू टेल थिंग्स, टीच तो खैर, आई मीन वॉट एवर आई नो आई टेल यू इज, जितना भी मेरे को आएगा हम बताएंगे तेरे को, और विल लर्न विद द फ्लो, या आई ट्राई टू गो इन डेप्थ थोड़ा सा। इन डेप्थ मतलब थोड़ा सा एनालिसिस इन अ डिफरेंट वे, जो कि थोड़ा मतलब फंक्शन का ग्राफ व्राफ यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, विच यू विल फाइंड रेयरली इन एनी अदर वीडियोस। तुमको बुक्स में मिल जाएगा बट वीडियोस में थोड़ा टफ होता है। सो यस, प्लीज ज्वाइन द नेक्स्ट क्लासेस एंड दैट वुड बी ग्रेट। इज अरिजीत हियर? So our next session will be on 5th of December. Timing will be around 8 p.m. Okay. लैपटॉप लेना है। देख बजट में मैक भी आ जा रहा है, बैटरी बैकअप वगैरह के लिए मैक मैक गो विद मैक। Hello. Yeah, so Ayushman, you can go for the questions now if they हाँ, have so any if anyone has questions. any question Like I regarding this see, session or I पहले some of one of the comments was कि is it free or paid?
That was नहीं भाई पूरा फ्री है भाई। whole. कुछ ऐसा पैसा And ऐसा नहीं yeah, लगेगा, what ड्यूबल will be नहीं the होएगा। duration? Ayushman, what will be the ड्यूरेशन duration? आई विल ट्राई टू कीप इट विद इन 1 आवर। बट अब कुछ कुछ टॉपिक्स होता है जो थोड़ा लंबा खींचता है, एंड Hmm. आई डोंट वांट कि उसको हम लोग 2 दिन में कवर अप करें। सो इंस्टेड Okay. ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, इफ सम टाइम अगर देर लग गया, ठीक है ना यार, हम Hmm. कर तू भी कर ले, ऐसा है। Okay, और टाइम क्या होगा इवेंट्स का? आई गेस दैट वी विल हैव अ डेली पोल नहीं होगा शायद, वी नीड टू। ऑल्टरनेट डेज होगा, एक दिन गैप करके, जिस दिन गैप पे तुम लोग को प्रॉब्लम शीट्स दिया जाएगा, विच यू नीड टू नहीं सॉल्व, वी विल टाइम। बी डिस्कसिंग इट अलोंग। ओके, तो टाइम क्या होगा? यही टाइमिंग होगा क्या, 8 फाइव पीएम टू अभी, सिक्स 8 पीएम हम बोल रहे हैं क्योंकि आई गेस अभी थोड़ा सा कुछ और भी है चीजें। इफ पीपल विल टेल मी टू चेंज टाइमिंग्स, आई कैन रीशेड्यूल इट टू सम अदर थिंग्स। और बहुत रेयरली चेंज हो रहा होगा ये टाइमिंग, टू इफ आई गेट बिजी इन समथिंग, तो बहुत रेयरली वो चेंज आएगा शायद। बट इफ यू टेल मी ऑन 8 पीएम, आई एम, आई गेस, क्वाइट फ्री दैट टाइम, है ना। 8 पीएम ठीक रहेगा ओके। क्योंकि लोग भी सुबह सुबह ट्राई वाई करेंगे, बहुत टाइम रहेगा उनके पास, बाकी कुछ पढ़ेंगे और सो या। एंड वन मोर डाउट वाज कि देयर इज अ गाय हु स्टार्टेड विद जावा, तो कैन ही कंटिन्यू हम्म, विद जावा और ही हैज टू स्विच टू हाँ, सी प्लस प्लस? नहीं नहीं पूरा स्विच ओके। नहीं करना होगा हम लोग, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। लाइक इवन इन जावा, इवन इन सी प्लस प्लस, द लॉजिक्स आर ऑलमोस्ट सेम। एंड इफ यू गो फॉर, इफ आई विल टेल यू इन सी प्लस प्लस कुछ सॉल्यूशन, तुम उसको थोड़ा सर्च करोगे ना, उसका जावा का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको, सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, लॉजिक पूरा सेम रहेगा। तो विल विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन द लॉजिक पार्ट, ठीक है। बाकी तो तुम वो सब वहां से कर लोगे, Okay, बाकी सारा yes. चीज। I guess the notes will be available on the community ka group. We have created a new group named as हाँ हाँ हाँ, उधर GDGOV नोट जाएगा। Goated Goated DSA Grind. वहाँ पे नोट्स और कोई होमवर्क या असाइनमेंट्स रहेगा क्या? हाँ, होमवर्क असाइनमेंट्स वही रहेगा ना, जैसा बोला, इसमें नोशन में और इसमें जाएगा। आज नहीं है, आज नहीं है, वी हैव टाइम फॉर टुमारो। इसलिए बोल रहे हैं ना, जितना अगर तुम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स जानना है। ओके, वेट वेट वेट, लेट मी राइट इट डाउन हियर। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स विल हैव, इफ यू हैव टू लर्न, देन लर्न एचटीएल इन सी प्लस प्लस। और इन जावा भी बहुत सारा होता है लाइक टेम्पलेट्स, तो उसको देख लो। फॉर एचटीएल आई विल रिकमेंड यू समथिंग, वेट, यूट्यूब पे जाना, जस्ट सर्च एचटीएल इन सी प्लस प्लस, ओके, ये वाला, दिस थिंग, आई जस्ट वन सेकेंड, इसका हम लिंक डाल ही देते हैं इस पे। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, बहुत छोटा छोटा वीडियोस है। बाकी एचटीएल पूरा समझाया है, पूरा जानना जरूरी नहीं है, बट ओके, आई विल राइट दैट आल्सो, वेट, इट्स ऑल इंक्लूडेड हियर, ओके। यहाँ से देखना, क्या क्या देखना, वेक्टर्स देखना, मैप्स देखना, सेट देखना, पेयर देखना, और इटरेटर्स वगैरह वी विल डू ऑन द गो, ठीक है, वो सब ठीक है। और ये मैप्स और सेट में अनऑर्डर्ड मैप्स, अनऑर्डर्ड सेट्स आएगा, वो सारा भी देख सकते हो। और नहीं भी अगर देखते हो, आई वोंट से कि नहीं देखो, बट अगर नहीं भी देखते हो तो ऑन द गो हो जाएगा सारी चीज, ओके। ये एक चीज है कॉन्सेप्ट्स में, लर्न अ बिट ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, थोड़ा थोड़ा बस। फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है, फंक्शन का कॉल बैक, मतलब रिकॉल कैसे हो रहा है, रिकर्शन कैसे हो रहा है फंक्शंस में, वो हो गया, ये देख सकते हो। बाकी एकदम इन डेप्थ सी प्लस प्लस पकड़ के अभी मत बैठना, गो विद द फ्लो, सब चीज वो सीखते जाएंगे। अगर तुमको नहीं आता, यू विल सी कि अच्छा ये भी कुछ है, देन यू विल लर्न, ओके। तो ऐसा नहीं है कि यू कलेक्ट एवरीथिंग, यू पुट इट हियर, एंड देन यू विल बी लाइक कि हाँ अब हमको सब आता है, अब हम शुरू करेंगे, 5 साल 6 साल इसमें लग गया, ऐसा नहीं करते। फिर क्वेश्चन लेके हम लोग सीखेंगे, ओके। ये सारा इंक्लूडेड है, ऊप्स, रिकर्शन, और लिख ही देते हैं फंक्शन कॉल्स, बेसिक एल्गोरिथमिक, वो यहाँ यहाँ पे देखो, ये है ना कंटेनर्स, इटरेटर्स, दिस थिंग, ये कंटेनर्स, इटरेटर्स, एल्गोरिथम्स, फंक्शंस। इसके एल्गोरिथम्स में कुछ कुछ ये सब है कि लाइक हम सॉर्ट करते हैं विद अ सिंगल
सिंगल लाइन कमेंट, लाइक अगर तुम सी प्लस प्लस में सॉर्ट कर रहे होगे तो सॉर्ट एरे कॉमा एरे प्लस एन अगर लिखोगे तो ये तुमको सॉर्ट करके दे देता है जहाँ एन तुम्हारा साइज हो। तो ये सब सीख सकते हो, ऑन द गो भी सीख सकते हो। अगर तुम पहले से सीख रहे हो थोड़ा फेमिलियर लगेगा बस, एंड दैट्स इट। तो ये सारा चीजें इफ पॉसिबल कल तक में परसों का तुम्हारे पास 8 बजे तक का टाइम है। सो यस, टिल देन यू कैन डू इट। So I guess that's it. Ayushman, thank you for या the time and thank you वन for सेकेंड your डीपी initiative. स्टार्ट कैसे Yeah. करें? डीपी स्टार्ट करने का, देख भाई हम तो प्रेफरेबली बुक से पढ़ते हैं। सो आई डोंट नो इफ पीपल लाइक रीडिंग बुक्स। इफ दे डू, आई हैव टू सजेशंस फॉर यू। गो फॉर दिस। One thing is this, I'll also include this link here. So ये सब हम लोग ऑन द गो देखते चलेंगे, बहुत सारा रिसोर्सेज है, बहुत सारा कुछ कुछ है। ठीक है, इवन आई डोंट नो एवरी, बट हाँ विल लर्न। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज को दिस कॉर्मन, यू कैन कंसिडर दिस बुक। इसका भी पीडीएफ लिंक है। ओके, दिस कॉर्मन इज अ ग्रेट बुक टू लाइक यूज एंड टू मास्टर। डीपी इसमें है अच्छा खासा, सो यू कैन प्रेफर दिस। दैट्स इट आई गेस। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, डीपी विल बी डन आफ्टर रिकर्शन ऑफ कोर्स। रिकर्शन पढ़ ले क्योंकि डीपी में रिकर्शन रिकर्शन के ही कॉन्सेप्ट है। अभी डीपी में बहुत टाइम है, सो इट्स ओके इफ यू डोंट नो, डोंट वरी। यस अरिजीत। Yeah, so that's it. People, thank you for joining, and we will have the next session on, I guess, 5th of Jan, the first session, like practically the first session. इसमें we will more towards introduction, and then so we will start the learning phase. And we have the community group. Please join. I'll ask someone to just put a link here, comments में, ताकि everyone can join. फिर हम उसे ये recording भी रहेगा. You can come back and check it out. जो नोट्स है वो कम्युनिटी में ग्रुप बनाया है डीएसए सीरीज में, उसमें यू विल गेट द notes for every day and you can talk to Ayushman. He will clear all your doubts and all. So that would be it. Share with your friends and yes, let's go. Bye. या गुड बाय, बाय बाय।